So welcome everyone to Beyond the Start Line. ठीक है तो आज हम let me just give me a second. Right. So आज हम will talk about maintaining momentum on your exam journey. ठीक है तो I know अभी exam बहुत करीब आ रहा है. It's like you guys have less than a month now, right? Or सब परेशान है, everybody is nervous, or a lot of people will think of giving up now. But we'll talk about how you can keep going and keep maintaining your momentum. ठीक है? Okay. So सबसे पहले we'll introduce the session, then I'll tell you my journey कि मैंने क्या किया था and what helped me get to the end of the exam. The why power up, the art of consistent study कि आप किस तरह से हर रोज पढ़ सकते हो. Burnout, battleground, adapting and re-energizing mid-journey, or like almost the end of the journey. I'll give you some tips. I'll tell you what you have to take away from this session. And last one, we'll do question answers. We'll keep it short. We'll keep it nice. Okay. Right. So AQ के लिए, especially AQ के लिए, because AQ का syllabus बहुत ज़्यादा होता है. ठीक है. और AQ के लिए और या फिर किसी भी एग्जाम के लिए तैयारी करना बहुत ओवरवेलमिंग हो जाता है. ये लाइक 3 months जिसमें आप इतना ज्यादा पढ़ रहे होते हो और सिर्फ पढ़ रहे होते हो. ठीक है. एंड इट बिकम्स सो ओवरवेलमिंग कि you start burning out. ठीक है. So in this webinar we will basically talk about वो कौन सी चीजें हैं जिससे आप मोटिवेटेड रह सकते हो और अपने स्ट्रेस को मैनेज कर सकते हो. ठीक है. और आखिर तक you'll know कि आप ये एग्जाम में किस तरह you can live through it, you can thrive during it. ठीक है. Right. So my journey was pretty much as you would expect. It wasn't a straight road to success. There were कुछ दिन ऐसे होते थे जब मैं बहुत energized होता था, especially शुरू में जब से मेरे boards खत्म हुए, I was so excited to study for AKU and ace the test कि मैं हर रोज मैं एक बुक 3 दिन में खत्म करता था. Like that's crazy. लेकिन आराम से मेरा स्टेमिना खत्म होता गया and I started burning out. और फिर ऐसे दिन आने लगे कि जब मुझे पढ़ने की थोड़ी सी भी एनर्जी नहीं होती थी. ठीक है. So there were ups and downs, but I put a lot of effort into reflecting कि जो हो रहा है वो क्यों हो रहा है. ठीक है. और मैंने बहुत सारी एफर्ट डाली, राइट. और वो एफर्ट बेसिकली काम आती है, राइट. सो इट्स नॉट लाइक कि जब आप डाउन फील कर रहे हो तो यू जस्ट गिव अप. देयर आर थिंग्स यू कैन डू. ठीक है. बहुत सारी चीजें हैं जो आप कर सकते हो टू अवॉइड दैट इन द फर्स्ट प्लेस. एंड देन इफ दैट हैपेंस तब उसको बेहतर बनाने के लिए द थिंग्स दैट यू कैन डू. ठीक है. और फिर मैं क्या करता था जब मैं पढ़ाई से बहुत तंग हो चुका होता था, बिकॉज you're out of school. This is pre-university phase जब आपको सुबह से रात तक in your house
you try to study, and that's all that happens throughout these 3 months. ठीक है? तो अगर आप सिर्फ पढ़ते रहोगे, if that is all you'll do, you won't stay sane by the end of it. ठीक है? तो मैं क्या करता था, I would go back to doing other things. ठीक है? I had so many hobbies. I read, I write, I draw. ठीक है? तो मैं क्या करता था, on the days that I'm not feeling like studying, I'd go back to reading, go back to writing and drawing and doing everything other than studying. ठीक है? So this was like a small break जो कि मैं लेता था. ठीक है? अब इससे क्या होता था कि जब मेरा वो बर्न आउट वाला पीरियड खत्म होता था, तो आई वाज रेडी टू स्टडी अगेन, ऑल एक्साइटेड एंड ऑल एनर्जाइज्ड, और उससे मैं और बेहतर पढ़ सकता था. तो बीच में छोटे छोटे ब्रेक्स लेना इज वेरी इंपॉर्टेंट, एंड आई थिंक दैट्स व्हाट केप्ट मी इन अ बेटर स्टेट ऑफ माइंड इन द एग्जाम. ठीक है? एग्जाम में मेरा दिमाग बहुत खत्म नहीं हो चुका होता था, राइट? आई वाज एबल टू थिंक and do and like sit through the exam, right? So this, taking breaks is very important. I think that's what helped me throughout my journey. Okay, so that was my journey. Now हम बात करेंगे कि कौन सी strategies हैं जो आप use कर सकते हो to sustain your motivation. ठीक है? कि आपकी motivation बनी रहे. Okay, why power up? तो जब आप तैयारी कर रहे हो ना, you have to ask yourself कि आप क्यों तैयारी कर रहे हो. ठीक है? आप AKU के लिए, why is it your dream college? आप AKU क्यों जाना चाहते हो? आप ये एग्जाम क्यों देना चाहते हो? ठीक है? And you see yourself in a place where you have always dreamed about. ठीक है? And you know that it will give you self-fulfillment, right? So when you try to think of your why do you want to do it? Why is it important? What will it do with your life? Right? So that basically gives you a lot of motivation. ठीक है? तो आप जब भी आप पढ़ने बैठते हो, ask yourself maybe कि क्यों पढ़ना है, and you'll get an answer कि आपको AQ की टेस्ट पास करनी है, and क्यों पास करनी है, क्योंकि that's the place you've always wanted to go. You've always wanted to become a doctor. You've always wanted to graduate from AQ, right? If you have, that is, whatever your why is, just recall your why. ठीक है? आप उसको याद करने की कोशिश करो, and just use that as a motivation. ठीक है? So that basically that will power you up. वो आप पे बहुत ज़्यादा motivation दे देगा. ठीक है? So that's something you can do. उसके अलावा आप journaling कर सकते हो ना. I think journaling is a very good way to reflect. ठीक है? कि आपने last week maybe आप अच्छा नहीं पढ़ पाए. तो what were the things जिसकी वजह से आप अच्छा नहीं पढ़ पाए, right? तो आप, and then you can avoid doing those things in your coming week, right? So इस तरह से you can journal your ideas, maybe your feelings, because it's very overwhelming. ये बहुत ज़्यादा overwhelming होता है period ना. So you can journal, you can write down your feelings, you can write down what you have been feeling throughout, right? So journaling is a good tip. उसके अलावा आपके पास कुछ विजुअल रिमाइंडर्स हो सकते हैं आपके सामने, जैसे इमेजेस, कोट्स आपके सामने, wherever you study, आप अपने सामने just stick some quotes on your wall, right? जिसको आप पढ़ के whatever gives you motivation. ठीक है? Just have some visual reminders. If you're like very obsessed with wearing a white coat, have a picture of that, right? So visual reminders will keep you going. Okay, and why does it work basically? So इससे क्या होता है कि आपका पैशन, आपकी जो एक्साइटमेंट है, वो रीइग्नाइट होती है. ठीक है? एंड यू बेसिकली डू वांट टू डू इट. आप बोलते हो कि मुझे करना है क्योंकि मुझे कहीं पे पहुंचना है ना. So जब आपको ये याद आता है ना, that basically does power you up. ठीक है? And it works, right? You can try it. You can try it for yourself. Okay, then we have visualization techniques. ठीक है? तो आप 5 मिनट के लिए हर रोज आप खुद को विजुलाइज कर सकते हो कि आप एग्जाम में बैठे हो. ठीक है? आपने एग्जाम दिया है. ठीक है? एंड देन आप आए हो एंड यू गेट द रिजल्ट, और आपने एग्जाम पास कर लिया है, राइट? एंड दैट इज अ बिग अचीवमेंट, आई एम टेलिंग यू. ठीक है? एंड यू आर सेलिब्रेटिंग द मोमेंट एंड you have achieved your dream basically. So that visualization will help you. ठीक है? Because when you want something so bad, you definitely want to do something about it. ठीक है? जब आपको कोई चीज इतनी ज्यादा चाहिए होती है, ठीक है, तो आप उसके लिए कुछ करना चाहते हो. ठीक है? और आपको पता है कि आपको ये चीज हासिल करने के लिए you have to study.
ठीक है? तो your mind would want to study because it knows कि by the end of this tunnel there is a reward, the reward that you bloody need, जिसकी आपको बहुत जरूरत है, right? So that's how you manipulate your brain, ठीक है? So you visualize and the brain, and you just want to have it, right? And that's when your brain wants to study, ठीक है? ओके, उसके बाद आप मेंटल रिहर्सल्स कर सकते हो। आप खुद को देखो, आप एग्जाम में बैठे हो और आप काम रह हो ना, क्या यू जस्ट इमेजिन योरसेल्फ फीलिंग calm and confident। तो इस तरह से जब ऐसे करते रहोगे ना, यू कैन, इट विल हेल्प यू ऑन द डे ऑफ द एग्जाम, ठीक है? तब आपको उस जो एग्जाम डे की एंजाइटी होती है ना, उससे आप वो आपकी बेहतर होगी, ठीक है? तो फॉर अ लॉट ऑफ पीपल द एग्जाम डे एंजाइटी इज अ ह्यूज प्रॉब्लम, ठीक है? बहुत लोगों के लिए उससे बहुत सारी चीजें खराब हो जाती है, ठीक है? सो दिस इज समथिंग यू कैन डू। आप मेंटल रिहर्सल कर सकते हो कि आप एग्जाम में बैठे हो एंड यूर फीलिंग calm, ठीक है? So basically you're seeing all the potential things that might go wrong and you're preparing yourself for it, that you're staying calm anyway, right? तो इसलिए ये आप कर सकते हो if you get a lot of like exam day anxiety. So that's one visualization technique that you can do. अब ये क्यों काम करता है? Why does visualization technique work? Because इससे क्या होता है, so जैसे कि मैंने आपको बताया ना कि आपके दिमाग में एक कंडीशन बनती है ना, ठीक है? And when you want it so bad, this is basically the reminder कि आपको वो चीज चाहिए। और कोई चीज आपको इतनी जब चाहिए होती है ना, तो you want to do anything for it, and that's how you prepare your brain for studying, ठीक है? तो इससे you'll study better and you will stay goal oriented, ठीक है? Okay, and then we have affirmative self talk, ठीक है? कि आप खुद को बताओ कि you're capable, you can do this, कि आप कर सकते हो। Every day you wake up, आप उठते हो and you tell yourself, आप खुद को बताओ, ठीक है? कि आज के दिन I have to study to my to my full potential, ठीक है? सोने वक्त you tell yourself that you did well, आपने पूरा दिन बहुत अच्छा काम किया, and you have to continue doing that for a couple of days, ठीक है? तो इस तरह से जो पॉजिटिव अफर्मेटिव सेल्फ टॉक होती है ना, उससे your brain का कॉन्फिडेंस बूस्ट होता है, ठीक है? And you stay, basically you stay, you know, you want to do this again because you basically feel the achievement inside you, right? You feel that achievement, or uske liye, because it's very addictive, you know, achievements are addictive. Do you want to do this again? The next day आप उठते हो, आप खुद को बोलते हो कि आज भी पढ़ना है, ठीक है? For the sake of the reward that you get, the fulfillment that you get, ठीक है? फिर आप तो आप बोलते हो कि you wanna study, okay? And you have to study and you can do this, right? The affirmative talks basically take you throughout the day, gives you your achievement reward, and fulfills your responsibilities, that is, okay? So do that, okay? So जब भी आपको कोई भी पढ़ने में मुश्किलात आए या फिर किसी भी चीज़ में मुश्किलात आए, तो आप खुद को याद दिलाओ, ठीक है? आपने कि एनीथिंग दैट यू डिड पहले, किसी भी चीज़ में आपको सक्सेस मिली, ठीक है? आपकी कोई भी स्ट्रेंथ, कोई भी स्कूल के एग्जाम को याद करो, व्हेन इट वाज सो हार्ड, जब पढ़ना इतना मुश्किल था लेकिन आपने कर दिया, ठीक है? यू ओवरकम द ऑब्स्टेकल्स, you did overcome the obstacles, ठीक है? तो you can do this again। अगर तब कर सकते थे तो अब भी कर सकते हो, right? So whenever you feel down, whenever you feel discouraged that कि आपकी बस की बात नहीं है, तो you focus on जो आपने पहले overcome किया है, ठीक है? And you show yourself कि अगर आपने पहले किया है तो आप अब भी कर सकते हो, ठीक है? So you can do this all over again, and you can do this 100 more times if you have to, ठीक है? Because you are capable, you have done this before, ठीक है? But that's true, okay? That's also true. And it works because it rewires your brain. ठीक है? Up your mind believes what you tell it. ठीक है? You believe it or not, but your mind believes what you tell it. So if you keep telling it something over and over and over again, it believes it. And when it believes it, it accomplishes it. अगर वो ये मान जाएगा कि you can do it, then it will make you do it. ठीक है? तो आप कर लोगे। So self-talk is important, it works, it's effective, and it's very, very helpful. Okay, then we have the art of consistent study. कि अब हर रोज पढ़ना मुश्किल होता है, right? आप एक हफ्ता पढ़ लोगे, शुरू वाले 3 हफ्ते पढ़ लोगे, okay? But then you just don't want to do it because the same thing over and over again, you know, you want it to stop.
and it's not, you know, it's not going to stop for another freaking month or so, right? तो आप हर रोज कैसे पढ़ो, right? It's not. Staying consistent सबसे मुश्किल है, ठीक है? So how can you do it? पहले तो आप अपनी एक रूटीन बनाओ, ठीक है? एंड अपनी रूटीन में सिर्फ पढ़ाई नहीं डालनी, ठीक है? The specific times जब आप पढ़ रहे हो, and the specific times when you're doing other things, ठीक है? There are breaks in between. There is sleeping time for you. There is having fun time. There is eating time. There is maybe like listening to music time, just calming yourself down time, and also studying time. ठीक है? And when you have the schedule and you're sticking to it, तो उससे आप हर रोज जो है कंसिस्टेंटली पढ़ सकते हो, ठीक है? जस्ट मेक्स इट इजियर, इससे आसानी होती है, आसानी से आप यू नो लाइक व्हाट यू शुड एक्सपेक्ट, ठीक है? कि आप, आपको पता है कि मैं जैसे जैसे यू नो अगर फॉर एग्जांपल आपको एक हफ्ते के लिए पढ़ना है, तो आप बहुत ज्यादा पढ़ लोगे, बहुत ज्यादा पढ़ लोगे, बिकॉज यू नो कि एक हफ्ते में ये खत्म हो जाएगा। पर जब आपको 3 महीनों के लिए पढ़ना है एंड यू डोंट नो व्हेन इट्स गोना एंड, सो आप अपनी अपने दिमाग को छोटे रिवॉर्ड्स दे सकते हो, ठीक है? कि आज के दिन आपको इतना इस टाइम पे इतना इतना पढ़ना है, राइट? एंड बाय द एंड ऑफ इट इट विल बी ओवर, ठीक है? सो व्हेन यू नो इट्स व्हेन इट्स गोना ओवर, व्हेन इट्स गोना बी ओवर, तो आप कंसिस्टेंट रहते हो, ठीक है? बिकॉज यू नो यू हैव रिवॉर्ड्स एट द एंड ऑफ इट, तो आप करते रहते हो, ठीक है? सो दैट्स हाउ यू स्टे कंसिस्टेंट। तो आप अपनी एक रूटीन बनाओ, ठीक है? मेक अ रूटीन and add everything that you think is necessary for you into it, giving most of your time to studying but also to other things, ठीक है? And then you have habit tracking. So जब आप अपने study hours को track करते हो, तो last में when you end, by the end of the day you see कि आपने कितना पढ़ा, ठीक है? जो आप देख लेते हो कि आपने कितना पढ़ा, and let's say it's good, आपने अच्छी तैयारी कर ली एक दिन में, तो आपकी आपको मोटिवेशन मिलती है, राइट? एंड यू वांट टू डू दैट अगेन, यू मे बी वांट ओवर overdo it, right? But don't overdo it, yeah, but you want to do it again, right? आपका confidence boost होता है, तो that also helps you stay consistent, okay? रूटीन जो है उससे, जैसे कि मैंने आपको बताया, you you have to you have to put effort at certain times of the day and you know it, right? And so your brain basically puts its all in that certain time. जब आप पूरे दिन ऐसे lazily you try to study, तो you're like कि you have the whole day और आप पूरा दिन पढ़ सकते हो, and your brain's like it gets lazy, it doesn't put all its all into it, right? So when you have the specific time जब जिसमें आप पढ़ रहे हो, the brain puts its all, ठीक है? तो routine बनाना will help you, ठीक है? Okay. Okay, then we have strategic planning. जैसे कि मैंने आपको बताया ना कि like having short micro goals is important, ठीक है? तो it also applies when you're studying, ठीक है? तो जब आप पढ़ रहे हो, तो don't tell yourself कि आज मुझे let's say chemistry खत्म करनी है, right? या फिर study पढ़नी है, sorry, या फिर chemistry पढ़नी है, right? पर आपको क्या करना है, you have to make short goals for yourself, ठीक है? कि आज मुझे for example एसिड और बेसिस के प्रैक्टिस क्वेश्चंस खत्म करने हैं, ठीक है? और जब ये शॉर्ट गोल रखोगे ना, तो क्या होगा कि वो जब जल्दी रिलेटिवली जल्दी खत्म हो जाएगा ना वो काम, तो आपको क्या, आपको इंस्टेंट रिवॉर्ड मिलेगा, ठीक है? जब आपको इंस्टेंट रिवॉर्ड मिलेगा, तो आप दूसरा शॉर्ट गोल करोगे, ठीक है? और जब आपके पास शॉर्ट गोल होता है ना, एक माइक्रो गोल होता है, तो आपको करने का मन भी करता है, राइट? बिकॉज यू नो कि वो जल्दी में खत्म हो जाएगा, सो यू स्टार्ट स्टडिंग। इंस्टेड इफ यू से कि आज मैं 5 चैप्टर करूंगा, राइट? और आपसे शुरू ही नहीं हो रहा, यू लाइक इतना ज्यादा है, like your brain just doesn't want to do it, right? Because it's such a big deal, and to just break it down into smaller goals. जब आपका smaller goal होगा, तो आसानी होगी करने में. There'll be instant reward, there'll be rewards in a day, like a couple of rewards in a day, right? So that's good. ठीक है? So do that. Break it down, break your syllabus into smaller basically parts, and then उसको भी small करो, you know? Up divide your syllabus into however many weeks are left, ठीक है? फिर उस weeks में भी आप एक एक दिन में divide करो,
ठीक है, and so every day you have this short goal that you have to accomplish. ठीक है, and then we have time blocking. ठीक है, कि आपको क्या करना है कि अपने टाइम को डिवाइड करना है. ठीक है, आप एक दिन में जरूरी नहीं है कि आप सिर्फ एक सब्जेक्ट पढ़ो. ठीक है, समटाइम्स क्या होता है कि आप कोई सब्जेक्ट पढ़ने का मन नहीं करता, so it's okay, you can close it up and start doing something else, right? तो what you can do is कि आप अपने टाइम को डिवाइड कर सकते हो. ठीक है, आप बोलो कि मैं 1 घंटा केमिस्ट्री पढ़ूंगा और उसके बाद I'll switch to maybe like revision, or I'll switch to practicing questions. ठीक है, और I'll just switch to another subject. ठीक है, ऐसे जब आप स्विच करते हो, ठीक है, तो क्या होता है, your brain gets interested into new thing that's happening. ठीक है, तो उससे you study better. ठीक है, तो जब आपको एक सब्जेक्ट बहुत टाइम तक पढ़ने का मन ना करे, तो switch to another subject, or switch to solving questions, or switch to revision, right? तो switch करो. ठीक है, that's how you block the time. You like time blocking करते हो. You assign a certain amount of time to one subject and then other and then another. So the change of things basically helps. Okay, तो इससे क्या होता है कि आपका दिमाग एक ही चीज से ओवरवेल्म या बोर नहीं हो जाता. ठीक है, you lose interest by the end of the day, right, in the subject. तो आपसे होता ही नहीं, right? So इससे क्या होता है, ओवरवेल्म नहीं रहते आप, और and they're like manageable time जो आप जिसमें आप basically कर रहे हो. ठीक है, then you can optimize your study environment. ठीक है, जहाँ पे आप पढ़ते हो उसको आप optimize करो. Make it suitable for studying. What do you enjoy? You enjoy your phone, right? It is a distraction. आपका phone एक distraction है. तो how about you keep it away from your study space? ठीक है, जहाँ पे आप पढ़ते हो उससे दूर रखो. ठीक है, एंड आप ना अपने दिमाग को ऑब्जर्व करो कि जब आप पढ़ने बैठते हो ऐसी कौन सी चीजें जो आपको डिस्ट्रैक्ट करती हैं. फॉर एग्जांपल, आप पढ़ने बैठते हो एंड यूर लाइक मुझे पानी पीना है, और फिर आप पानी पीने जाते हो. ठीक है, एंड यू टेक लाइक 30 minutes just to do that, right? तो what if आपके पास पानी सामने पड़ा हो, now your brain does not have an excuse to go out. ठीक है, so that's how you optimize your study space. ठीक है, आप हर एक चीज वो दूर कर देते हो जिससे आपको डिस्ट्रैक्शन हो. ठीक है, और इससे क्या होता है कि आपका एनवायरनमेंट ऑर्गेनाइज रहता है, और देयर थिंग्स जो आपको मोटिवेट कर रही है. इसके अब मैंने आपको बोला ना, देयर विजुअल पिक्चर्स आप लगा लो, राइट, कोट्स लिखवा लो, जो भी, लाइक जस्ट ऑप्टिमाइज योर स्पेस जहाँ पे आपको पढ़ने का मन करे, राइट. कुछ लोग लाइब्रेरी में अच्छा क्यों पढ़ पाते हैं, बिकॉज लाइब्रेरी इज एन ऑप्टिमल स्पेस टू स्टडी इन, राइट, क्योंकि उसमें कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं है, कोई आवाज नहीं है. ठीक है, you can't use your phone there, right, unless you go out of your way to disturb yourself. But yeah, I think that's how you can optimize your learning. ठीक है, अपने environment को better बनाओ, जैसे digital distractions कम करना. ठीक है, और तो you can use websites जिससे आपका phone block हो जाता है, right? And then time management, जैसे कि मैंने आपको बोला कि दिन में कब पढ़ना है, कितनी देर तक पढ़ना है. ठीक है, अगर आपको पता हो, पोमोडोरो इज एन ऐप. ठीक है, ये एक ऐप है जिसमें आप अपने टाइम को डिवाइड कर सकते हो, राइट. उसमें टाइमर चलता है 25 मिनट का. ठीक है, और आप 25 मिनट तक पढ़ते हो, फिर 5 मिनट का ब्रेक आता है. ठीक है, 5 मिनट का ब्रेक लेते हो और फिर से 25 मिनट पढ़ते हो. ठीक है, इसी तरह से आप 4 दफा ऐसे पढ़ के 25-25 मिनट, फिर आप एक लंबा सा 15 to 30 मिनट्स का ब्रेक लेते हो. ठीक है, so this is effective, right? आप ऐसे कर सकते हो, just so you're taking your breaks, and also studying. ऐसे आपको you feel better, right? Okay, तो so this is the same thing कि आपको टाइम ब्लॉक्स यूज करने हैं. ठीक है, कि आप इतना टाइम ये करेंगे, इतना टाइम ये करेंगे. सो फॉर एन आवर आप बोलते हो कि मैं ये चैप्टर की रीडिंग करूंगा. ठीक है, उसके बाद मैं 1 घंटे के लिए उसका क्वेश्चंस प्रैक्टिस करूंगा. फिर मैं लास्ट में जो यू आइडेंटिफाई जो क्वेश्चंस में आपको जो टॉपिक्स सब टॉपिक्स में आपको मुश्किल थी, एंड देन यू जस्ट रिवाइज द होल थिंग, राइट. तो इस तरह से यू कैन ब्लॉक योर टाइम. ठीक है, और इस तरह से यू कैन ऑप्टिमाइज योर आउटकम. ठीक है, आउट ऑफ द चैप्टर. ठीक है, और ये व्हाई डज इट वर्क,
तो इससे क्या होता है, आप थक नहीं जाते ना जब आप टाइम को ब्लॉक करते हैं, एंड यू लाइक यू आल्सो टेक ब्रेक्स इन द मिडल, तो आपका दिमाग energized रहता है, and you don't just lose your stamina or like fatigue your mind or something. ठीक है, तो that's effective as well. Okay, then we have the burnout battleground. Burnout is a very common thing because शुरू में आप बहुत ज्यादा पढ़ रहे होते हो, ठीक है, and then बीच में क्या हो जाता है कि you're burned out, अब आप कुछ कर नहीं पा रहे, ठीक है. So how do you avoid burnout? पहले तो you have to recognize when you're nearing the burnout. जब आप जब आपका burnout होना शुरू हो रहा है, how to recognize that, you know. तो there are some symptoms, कुछ ऐसी चीजें हैं जिससे आप बता सकते हो कि you're nearing the burnout, right? So आपको बहुत ज्यादा थकान महसूस होने लगती है, ठीक है, आप पढ़ने बैठते हो लेकिन your mind you can't, right? कि आपका दिमाग is not even ready to take any more, right? That's a sign of burnout. ठीक है, आपके मूड स्विंग्स हो रहे हैं, ठीक है, या फिर एंजाइटी हो रही है बहुत ज्यादा, या फिर फोकस ही नहीं हो रहा, ठीक है, there's just complete lack of focus. That means you're burning out, ठीक है. So when that happens, please like take a break, do something about it. So what are the things that we can maybe do to avoid this burnout stage? आप हर रोज check in करो, ask yourself कि आप कैसा feel कर रहे हो, right? क्या लगता है, do you think कि you are basically exhibiting the signs of burnout? Are you, right? So when you find yourself nearing burnout, you do something about it. You maybe like do fun things, maybe socialize, or just take a break or get some sleep, right? और इससे क्या होता है कि आपको complete exhaustion नहीं होती, ठीक है, you stay on track, you have regular breaks and regular study sessions, so you stay organized. Okay, proactive self-care. So self-care karna is very important. Don't forget yourself, right? Sona for 7 to 8 hours is very important. ठीक है. And then avoid blue light before bed. अब सोने जाने से पहले 1 घंटे तक आप कोई स्क्रीन यूज ना करो, ठीक है, उससे you'll get better sleep and you'll wake up rested for the next day, ठीक है. So इससे your concentration, your energy, your memory, and your quality of study is enhanced. Okay, and then we have physical activity. So physical activity, if you believe me, physical activity is a very important helpful tip that you can take from today, ठीक है. और जब पढ़ने जा रहे हो ना, तो आप थोड़ी देर के लिए लाइक मे बी डू अ स्प्रिंट, ठीक है, अब थोड़ा सा भाग लो, ठीक है, या स्ट्रेच कर लो. उससे क्या होता है कि जब एक्सरसाइज करते हो ना, तो एंडोर्फिन्स रिलीज होते हैं, ठीक है, जिससे आपकी ब्रेन की कंसंट्रेशन और लाइक बेसिकली द होल एक्टिविटी ऑफ योर ब्रेन, द इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी इंक्रीजेस, ठीक है. तो उसके बाद जब आप पढ़ते हो ना, आप एक तो कंसंट्रेशन और फोकस के साथ पढ़ते हो, और दूसरा जब आप पढ़ते हो, जो आप पढ़ते हो वो बेसिकली आप रिटेन कर पाते हो, ठीक है, बिकॉज आपका ब्रेन जो है अब एक्टिव स्टडीइंग कर रहा है, right? So basically, it actually works. Okay, I do this myself. जब भी मुझे पढ़ना होता है, I just do uh okay, if not like proper stretches or proper run sprints. आप अगर if you enjoy, you can just dance. ठीक है, आप अपने रूम में थोड़ा सा डांस कर सकते हो, ठीक है. उससे basically थोड़ी सी physical activity होने के बाद ना, your brain is activated, ठीक है. जब एक्टिवेट हो जाता है ना, तो यू स्टडी बेटर, ठीक है. So do whatever moves your body, whatever you like to use to move your body, ठीक है. So just get your brain wired up, active, ठीक है. And then stretch during breaks as well. तो आप breaks के बीच में, if you feel like आपका जो है strain आता रहा है and you're like losing it, तो आप you get up, take a break and start stretching, ठीक है, or dancing or running, maybe just do anything to get you back on track, ठीक है. और इसी तरह से आप रेगुलर एक्सरसाइजेस भी कर सकते हो, ठीक है. आप सुबह को उठ के मे बी लाइक प्लेजेंट वेदर, यू गो
you go up your roof, right, and just do some exercise, right, before you start with your day. तो आप regular exercise करेंगे तो आपको mental physical stress relieve हो जाएगा, ठीक है? So that's something you can also do. And then mindfulness and meditation भी आप कर सकते हो, ठीक है? So आप maybe like जब आप सोने जा रहे हो ना, तो जब आप लेटे लेटे हुए हो तो close your eyes and practice a bit of mindfulness, ठीक है? Breathing exercise. अब अगर आपको दिन में टाइम नहीं मिल रहा तो just do it before you sleep, right? आप लेटे हुए आंखें बंद करके you take deep breaths, do breathing exercises, right? And affirmative talk, ठीक है? So there are like guided meditation videos on YouTube that you can use to calm your mind down, ठीक है? Because a lot of people do have anxiety problems, right? So meditation and mindfulness helps you. Okay, I don't know if you guys know about 5 things you can see, and then 4 things you can hear or something, right? And then 3 things you can feel. I don't know. There's something called 5 4 3 2 1 wala. So do that. उससे क्या होता है आप जब आपको बहुत ज्यादा anxiety हो रही है ना, it distracts your mind basically. ठीक है, तो you can use this on the exam day to distract you from the anxiety, from the worry that, or like the things that your brain tells you, ठीक है? And अभी भी अगर आपको हो anxiety हो, ठीक है, stress हो, तो you can do this, ठीक है? हाँ, so जैसे कि मैंने आपको बताया ना, the guided meditation apps and YouTube videos that you can use to do the same. और इससे आपको क्या होता है, आपका stress relieve होता है, and you're able to focus better, ठीक है? Okay. Then adapting and re-energizing. कि आप किस तरह अडॉप्ट कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल, फॉर सम टाइम यू couldn't study for like a whole week. आपसे पढ़ा नहीं गया, आपकी कोई प्रोग्रेस नहीं हुई, so that's fine, right? उससे कुछ नहीं होता. You tell yourself it's okay, you don't have to panic, right? Progress isn't always linear, ठीक है? कभी आप ज्यादा पढ़ पाते हो, कभी आप बिल्कुल नहीं पढ़ पाते हो, and that's okay, ठीक है? Just there are days जब आप ज्यादा पढ़ पाते हो, when you have the motivation, makes the most out of it. And then just दिन आप नहीं पढ़ पा रहे हो, it's okay to take a break, right? देखो, taking a break and worrying, panicking about not being able to study is basically wasting the time, ठीक है? But अगर आप break ले रहे हो and you are genuinely, resting your mind, that is time used, ठीक है? वो आप टाइम वेस्ट नहीं कर रहे, ठीक है? बट अगर आप ब्रेक ले रहे हो and then you're constantly worrying about having taken a break, then there's no use of taking a break, because then you're basically wasting your time, right? तो आप ऐसा ना करो, okay? When you're taking a break, do genuinely take a break, ठीक है? Like, stop thinking about exam for now. Stop thinking about how much you have to study. Stop thinking about kitna syllabus hai, right? Or stop thinking about the number of questions they got wrong, right? So just take a break, practice mindfulness, do some exercise, ठीक है? Okay. And this works because setbacks are normal, and by this you basically prepare your brain for your coming motivation. Yay, okay? And then आप mock exams use कर सकते हो, ठीक है? तो इससे क्या होगा, it will prepare you for the real exam, ठीक है? Because mock exams जो जो इस तरह से formatted हैं जैसे exam होता है, it will help you, ठीक है, learn, right? So yeah, so do mock exams, ठीक है? इससे क्या होता है, anxiety, so कि आप क्या expect कर सकते हो ना exam में, ठीक है? कि आपके दिमाग कैसे काम करेगा. Are you feeling the anxiety from all the questions that you can't answer, right? And so you can devise ways to deal with that, right? Okay. Okay, and then celebrating milestones. तो बीच में छोटे milestones, ठीक है, about maybe finishing a chapter, about finishing half the syllabus, about getting maybe like more questions right,
than you did yesterday, right? It's just छोटे छोटे milestones जो है आप celebrate कर सकते हो, ठीक है? It's देखो लोगों को लगता है कि ये time जो है ना, you have to study so much कि you know like that's all there is, but that's not true. Treat it as a normal exam. Treat it like any other exam, ठीक है? Okay, the specific time you have to study, but it's not like there's no time for nothing else. ठीक है? If you think कि दोस्तों से बात करके आप जो है relief feel करते हो तो do that. अगर आपको लगता है कि reading करने से आपको मजा आता है तो do that. ठीक है? Whatever your hobby is, if you would like to go and play cricket, let's say, or play outside with your friends, do that. ठीक है? जो भी है आप कर सकते हो, ठीक है? It's just you have to study every day consistently, ठीक है? In specific periods of time, and that's all there is. ठीक है? इससे जो है आप एक तो अच्छे से पढ़ पाते हो, consistently पढ़ते हो, ठीक है? और you get the most out of it, और आप stress out भी नहीं होते, ठीक है? So try to manage your time and reward yourself. छोटे-छोटे wins पे reward करो. And how can you reward yourself? Take a 10-minute break, right? और relax कर लो, ठीक है? कोई snack, if you like a snack, if you like a drink or something, whatever, just treat yourself with that, ठीक है? अब कोई भी अपना favorite show देख लो, ठीक है? So basically give yourself a break, ठीक है? एक छोटा सा win हो गया, let's take a break. Then you prepare yourself for another reward, right? तो इस तरह से you can keep going, ठीक है? What are the takeaways? एक तो connect yourself with whatever your deeper purpose is. Why are you doing all this? Whatever, like there's so much stress. This is such a tough time. But what are you doing this for? अब क्यों कर रहे हो? Right? Is there a purpose to it? Is there a deeper meaning to whatever is going on in your life? So remind yourself, ठीक है? And then connect to it. ठीक है? छोटे छोटे steps लो, ठीक है? Micro divide your goal, ठीक है? सारे सिलेबस को डिवाइड कर लो, स्केड्यूल कर लो, ठीक है? एंड दैट्स हाउ यू कीप गोइंग, यू एंड यू नो बाय द एंड आपका खत्म हो जाएगा, बिकॉज आप बेसिकली अपनी रूटीन बनाई है जिसमें आप खत्म करोगे सिलेबस को, आपको पता है, राइट? और उससे you stay stress free, you stay caught up, and you stay focused, ठीक है? Right, self-care is one of the study tools. Self-care is the tip that you're looking for. अगर आपको लगता है nothing is working for you, try self-care, right? Try doing things for yourself and then studying, resting, sleeping, or whatever you like. Adaptability is key, ठीक है? Stay flexible. ठीक है, आप अपनी स्ट्रेटजीज को चेंज करते रहो. अगर एक चीज काम तो रिफ्लेक्ट ना, आप जर्नल करो, रिफ्लेक्ट करो. बिफोर स्लीपिंग यू आस्क योरसेल्फ व्हाट डिडंट वर्क टुडे, ठीक है? व्हाट डिडंट वर्क यस्टरडे, राइट? एंड देन यू द नेक्स्ट डे मेक इट बेटर, मेक इट डिफरेंट, ठीक है? सो अडॉप्ट, स्टे फ्लेक्सिबल, ठीक है? And then start doing this from today. Ask yourself maybe right now, why are you doing this, right? Okay, so now we will take questions. Okay, so I have the comments opened. You guys can ask any questions you want. देखो, right now I think Mohammad Musa, right? I think आपको अभी high yield चीजों पे focus करना चाहिए because there's very little time, ठीक है? और जो भी high yield है, how about you make a schedule, और आप उस पूरे जो भी आपको पूरा करना है ना इन दोनों में, divided into जितने भी दिन रह गए हैं, ठीक है? जब आप divide कर लोगे, राइट, तो आप एक दिन में वो सब कर लो जो आपने उस दिन को असाइन किया था, ठीक है? इस तरह से आपको पता है कि इस दिन तक आपकी पढ़ाई हो जाएगी, ठीक है? दिस सेव्स यू ऑल द वरी, ठीक है? इससे आपको टेंशन भी नहीं होती, और इससे यू बेसिकली you micro divide your goal, the whole syllabus, and you achieve it every day. अच्छा, तो केमिकल रिएक्शंस के लिए मैंने क्या किया था कि मैंने सारे
केमिकल रिएक्शंस एक ही जगह पे लिख लिए थे, ठीक है। जो भी केमिकल रिएक्शंस है ना, सारे मैंने एक ही जगह पे लिख लिए थे, ठीक है। सो इंस्टेड ऑफ like reading the chapters again and again, I would just memorize उस वहीं एक ही शीट से, ठीक है। जैसे आप फार्मूला शीट बनाते हो वैसे आप रिएक्शंस के भी एक शीट बना लो, ठीक है। उससे क्या होगा, आपको रिएक्शंस याद हो जाएंगे। ऐसे आपको रट्टा नहीं मारना, वैसे भी लाइक आई मीन यू अंडरस्टैंड हाउ द प्रोडक्ट्स आर फॉर्म्ड, राइट। तो आप आपने जब वो सीख लिया तो जस्ट कीप गोइंग ओवर द रिएक्शंस बार बार फ्रॉम द शीट, ठीक है। जैसे आपको पता है कि फार्मूला कैसे बना, व्हाट डज द फार्मूला मीन, ठीक है। फिर आप शीट बनाते हो समझ के, एंड देन यू जस्ट कीप मेमोराइजिंग और गोइंग थ्रू द शीट फार्मूलाज की ना। वैसे ही आप केमिकल रिएक्शंस के भी बना लो, राइट। जस्ट कीप गोइंग थ्रू इट, ठीक है। जो हाई चैप्टर्स है ना वो उनकी लिस्ट आप किसी को प्रीमेट से बोल दो, वो आपको भेज देंगे, ठीक है। पर आई थिंक किंगडम एनिमेलिया इज इम्पोर्टेंट, और प्लांटी इज इम्पोर्टेंट, और फिर हर चैप्टर के जो प्लांट्स वाला सेक्शन है ना, डू दैट, ठीक है, क्योंकि उससे क्वेश्चंस आते हैं। जैसे gases exchange, these are important, bioenergetics is important, then cell wala chapter is important, right? So do that. Okay, so I don't know what you mean by in-depth study, ठीक है, but AQ के लिए having a concept of very basic things, ठीक है, जो ऐसी चीजें जो बहुत बेसिक हैं, ठीक है, अगर आपको वो पता है, और जो डीप और जो वेरी नीश चीजें हैं ना, अगर वो नहीं पता तो दैट्स फाइन, ठीक है। जो बहुत कंट्रोवर्शियल या फिर बहुत ऐसी रट्टे वाली चीजें होती है ना, वो वो आपको याद करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल आई नो, जैसे केमिकल रिएक्शंस में इतने सारे टेम्परेचर्स होते हैं, ठीक है। सो आई डोंट थिंक दे विल आस्क यू दैट, सो डोंट मेमोराइज दैट, ठीक है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जस्ट लर्न सारे रिएक्शंस आप पढ़ लो, याद कर लो, ठीक है, और वो कैसे बन रहे हैं। जैसे SN1 है, फिर उनके जो ट्रेंड्स होते हैं ना, जैसे फॉर एग्जांपल प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी, कौन सा ज्यादा रिएक्टिव होता है, कौन सा कैसे होता है, राइट। एंड देन SN1 में किस मीडियम में, किस सॉल्वेंट में कौन सा रिएक्शन होता है, SN1 SN2, राइट। तो इस तरह की चीजें हैं ना, वो ऐसे पूछते हैं, ठीक है, जो कॉन्सेप्चुअल हो, जिसपे बेसिकली आप कुछ अप्लाई कर सको, कोई कॉन्सेप्ट अप्लाई कर सको, राइट। ऐसे नहीं कि रिकॉल याद कर लिया और वो वहां पे लाइन आ गई, आपने पढ़ लिया, ठीक है। सो या जस्ट स्टडी स्मार्ट, जो काम की चीजें हैं वो वाली पढ़ लो, ठीक है। कैटलिस्ट, तो कुछ कैटलिस्ट आर इम्पोर्टेंट जो जो बहुत, जो आप हर जगह लाइक एम्फसाइज होते हैं, दोज रिएक्शंस आर इम्पोर्टेंट। बट अदर जैसे कैटलिस्ट रिडक्शन वाले होते हैं, LIL ALH4 होता है, राइट। सो दैट इज इम्पोर्टेंट क्योंकि वो हर जगह यूज होता है, राइट। सो इस तरह के जो कैटलिस्ट हैं वो आप याद कर लो, बाकी हर कैटलिस्ट याद करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। फिजिक्स इज ऑल अबाउट एप्लीकेशन, ठीक है। जो फॉर्मूलाज हैं वो आपको अप्लाई करने होते हैं, सो लर्न टू अप्लाई फॉर्मूलाज, ठीक है। लर्न टू आइडेंटिफाई कि कौन सा फॉर्मूला अप्लाई कहाँ पे करना है, ठीक है। आपके पास क्वेश्चन है, स्टेटमेंट है, अब आपको कैसे पता उस पर क्या फॉर्मूला लगेगा, ठीक है। तो प्रिपेयर योरसेल्फ फॉर दैट, ठीक है। इज देयर एनी अदर क्वेश्चन? ओके, सो नीट जो है, नीट इज वेरी एक्सटेंसिव, ठीक है। एंड आई डोंट थिंक यू नीड टू टेक नीट के लेक्चर्स, ठीक है। अगर आपको वहां से समझ में आ रहा है तो ठीक है, बट इफ नॉट, और अगर वो बहुत ज्यादा लग रहा है तो वो करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। बिकॉज उनका सिलेबस बहुत एक्सटेंसिव होता है, ठीक है। तो जस्ट ट्राई टू स्टिक विथ द सिलेबस जो आपको वेबसाइट्स पे दिया हुआ है ना, जस्ट ट्राई टू स्टिक विथ दैट। हाँ, तो गैल्वेनोमीटर, वोल्ट मीटर, जैसे रेजिस्टेंस के होते हैं सर्किट्स, राइट, वो वाले, तो ये करने हैं फिजिक्स में भी। और जो फॉर्म बेसिकली जो सारे फॉर्मूलाज होते हैं, वो जो रूल्स होते हैं, राइट हैंड रूल, थंब रूल्स, ठीक है, वो वाले करने हैं।
देन देन नोइंग के डायरेक्शंस कैसे होती हैं, पॉजिटिव किस डायरेक्शन में होता है, नेगेटिव किस डायरेक्शन में होता है, एक्सेलरेशन पॉजिटिव कब होगी, नेगेटिव कब होगी, ठीक है। सो ऑल दीज थिंग्स आर इम्पोर्टेंट। बाकी जो रट्टे वाली चीजें है ना, वो आप छोड़ सकते हो, ठीक है, कोई रट्टे लगाने की जरूरत नहीं है। अगर रट्टे वाली एक दो चीजें आ भी गई तो इट्स फाइन, ठीक है, यू कैन स्किप दोस, नो वरीज, बिकॉज रिमेंबर फॉर AQU the only goal is to pass test। अगर आप एक मार्क से पास कर रहे हो ना, फिर भी you've got it, ठीक है। तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो एक दो मार्क्स से पास करते हैं, ठीक है, बट those are the people who get into or who pass the interview, ठीक है। क्योंकि जो इतना पढ़ते रहते होते हैं ना, AQ doesn't need people who are always studying, ठीक है, always memorizing things, ठीक है। AQ needs people who are good at everything, ठीक है, to work on your extracurriculars instead of like always studying, you know। हाँ, तो कुछ चैप्टर्स जो बहुत लो यील्ड हैं, अगर आपके पास टाइम नहीं है और वो नहीं हो पा रहे हैं, तो इट्स ओके आई गेस, ठीक है, बिकॉज अभी तो टाइम भी नहीं है ना सब करने का। तो अगर कुछ चैप्टर्स आपसे नहीं हो रहे हैं और वो लो यील्ड हैं, जैसे लास्ट इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री वगैरह वाले चैप्टर्स होते हैं, जो लो यील्ड हैं, उनको आप छोड़ सकते हो, ठीक है। बाकी जो इम्पोर्टेंट चीजें हैं ना, वो करनी है, ठीक है। मैथ्स के जो टॉपिक्स हैं, आप वो यूट्यूब से पढ़ सकते हो, ठीक है। आप पैंडा मैथ्स का बुक यूज कर सकते हो, ठीक है। तो आपको जस्ट कॉन्सेप्ट चाहिए कि परसेंटेज को कैसे सॉल्व करते हैं, फिर आप प्रैक्टिस करते रहो, राइट। सो यू जस्ट प्रैक्टिस क्वेश्चंस, ठीक है, एंड बेसिकली लर्न दैट वे, ठीक है। तो आप प्रैक्टिस करते रहो। सो मैथ्स इज ऑल अबाउट प्रैक्टिस बेसिकली। आपने सीख लिया परसेंटेज कैसे सॉल्व करते हैं, देन व्हाट, देन यू प्रैक्टिस, ठीक है। एक्स्ट्रा करिकुलर्स आर ऐसी चीजें जो आप पढ़ाई के अलावा करते हो ना, जैसे जैसे सम पीपल लाइक टू राइट, ठीक है, तो वो लिखते हैं, ठीक है। सम पीपल लाइक पब्लिक स्पीकिंग, तो वो स्पीचेस करते हैं, डिबेट्स करते हैं, MUNs में पार्टिसिपेट करते हैं। तो दीज आर, जैसे स्पोर्ट्स करना, दीज आर एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज। तो जो आप अगर आप टेस्ट पास कर लोगे, राइट, तो इंटरव्यू के टाइम दे विल सेंड यू अ फॉर्म जिसमें आपको अपनी एक्स्ट्रा करिकुलर्स लिखनी होंगी ना। तो वो आपको अभी से करनी होंगी, ठीक है। आपको वैसे तो स्कूल से करनी थी, बट अगर आपने नहीं की तो यू कैन डू देम नाउ। हाँ, तो आप कोई भी चैप्टर एक दफा पढ़ के एंड देन यू प्रैक्टिस। देखो साइंस रीजनिंग में क्या होता है, साइंस और मैथ रीजनिंग जो होती है ना, उसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती, ठीक है। तो अगर आपको कोई MCQ नहीं आ रहा, ठीक है, आप सोच रहे हो, आप यू ट्राई टू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन और आखिर तक नहीं आ रहा, देन यू मार्क एनीथिंग, क्या पता सही हो जाए, राइट, क्योंकि उससे कुछ कट तो नहीं रहा ना, कोई मार्क्स तो नहीं जा रहा। लेकिन जो साइंस का पोर्शन है, बायोलॉजी, केमिस्ट्री और फिजिक्स का, उसमें अगर आप कोई चीज कर रहे हो ना, तो आपके एक्स्ट्रा मार्क्स जाते हैं, नेगेटिव मार्किंग, राइट। तो उसमें अगर आपको लगता है कि आप कोई चीज बिल्कुल नहीं आती, तो you just skip it, ठीक है। then you don't then you don't attempt it basically। Science reasoning is very simple, okay। Science reasoning is basically रीजनिंग, ठीक है। उसमें आपको बस दिमाग लगा, उसके लिए आप तैयारी नहीं कर सकते, ठीक है। आप कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर सकते हो आप। बट यू कांट प्रिपेयर योरसेल्फ फॉर साइंस रीजनिंग, ठीक है। साइंस रीजनिंग में कुछ भी आ सकता है, ठीक है। तो बेसिकली व्हाट यू कैन डू इज कि आप प्रैक्टिस करो, बट देन जस्ट स्टे फोकस्ड और स्टे एक्टिव, अपने दिमाग को एक्टिव करके यू ट्राई टू सॉल्व द क्वेश्चंस जो आपके पास एग्जाम में आ रहे हैं, ठीक है। दैट्स ऑल यू कैन डू, राइट। जस्ट ट्राई योर बेस्ट इन द एग्जाम, ठीक है। ओके, सो जैसे कि मैंने बताया आपको ना कि एक्स्ट्रा करिकुलर्स आर इम्पोर्टेंट फॉर AKU, ठीक है। तो जब आप एग्जाम पास कर लोगे ना, तो दे विल सेंड यू दिस फॉर्म,
पूरा स्टेज 2 फॉर्म होगा, जिसमें आपको अपनी एक्स्ट्रा करिकुलर्स लिखनी होंगी कि अपनी पढ़ाई के बगैर क्या किया, व्हाट डिड यू डू इंस्टेड ऑफ लाइक अदर देन स्टडीइंग। ठीक है, आपने टेस्ट पास कर ली, यू नो एवरीथिंग, बट डिड यू डू समथिंग एल्स, समथिंग मीनिंगफुल इन योर लाइफ, राइट? सो दे बेसिकली वांट यू टू डू दैट। ठीक है, तो बेसिकली प्रीमेड इज डूइंग दिस इंटर्नशिप currently from 1st to 3rd July। ठीक है, जिसमें सो इट्स बेसिकली फ्रॉम रावलपिंडी मेडिकल यूनिवर्सिटी, वो जिसमें अगर आप रजिस्टर करो तो आप इंटर्नशिप कर सकते हो विथ देम, जिसमें वो आपको डॉक्टर्स का काम दिखाएंगे, हाउ लाइक डॉक्टर्स वर्क, और हॉस्पिटल दिखाएंगे आई थिंक। ठीक है, तो दैट्स आल्सो एन एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी। ठीक है, इसमें आपको मेडिकल थीम्ड गेम्स खिलाएंगे। ठीक है, और फिर क्लिनिकली आपको कुछ चीजें, देखो टेस्ट पास करने के बाद आपके पास 5 से 7 दिन होंगे। ठीक है, सिर्फ 5 से 7 दिन वो फॉर्म भरने के। ठीक है, और 5 से 7 दिन में आप कुछ नहीं कर सकते। ठीक है, सो इफ यू गाइस कैन डू दिस इन दिस इंटर्नशिप, तो दिस इज समथिंग दैट यू कैन राइट ऑन योर फॉर्म। ठीक है, they'll also like show you the hospital and give you a certificate। ठीक है, तो आप मे बी लाइक बोलो कि मैं ऐसे कुछ भी लिख दूंगा। ठीक है, बट दे बेसिकली दे आस्क यू अ प्रूफ। आप बोलेंगे, आपको बोलेंगे कि सर्टिफिकेट दो साथ में, या कोई पिक्चर दो वेयर यू आर डूइंग द थिंग दैट यू रिटन, कोई भी प्रूफ दो। ठीक है, और उसके साथ वो एक कॉन्टेक्ट नंबर भी लेंगे, जिसमें फॉर एग्जांपल अगर आपने ये इंटर्नशिप कर ली, तो आपको उनका रावलपिंडी का ईमेल एड्रेस लिखना पड़ेगा, या फिर कॉन्टेक्ट नंबर लिखना पड़ेगा, जिससे वो कॉल करके कंफर्म कर सकें, राइट? सो यू बेसिकली हैव टू डू थिंग्स टू राइट देम ऑन द फॉर्म। ठीक है, no, this it's not important, I'm just suggesting that you should do it if you can। ठीक है, ये रावलपिंडी में है, रावलपिंडी में, if you can तो do register for it। ठीक है, अगर नहीं तो आप कुछ और चीजें भी कर सकते हो, जैसे स्पोर्ट्स कर सकते हो। ठीक है, या फिर जो भी आपकी हॉबीज हैं, you can basically you can work on those। ठीक है, you accomplish something with those। ठीक है, I think the last date to apply is शायद today। ठीक है, I think आज है last date to apply, तो आप आज कर लो if you plan on doing this। ठीक है, yeah, I think 150 MCQs, अगर अगर आपको समझ में आ गया है तो 150 MCQs is pretty good। ठीक है, अगर आपको लगता है by the end of 150 MCQs कि आपको अच्छा समझ में आ गया है, तो I think that's good to go। सर मेल के लेक्चर्स जो है वो आपने कोर्स ज्वाइन किया है तो आपको मिल जाएंगे। ठीक है, सो इफ यू ज्वाइन द कोर्स, आपके पास डैशबोर्ड होगा जहाँ पे आपको सब कुछ अपलोड कर दिया होगा, राइट? तो आप वहां से देख सकते हो। ठीक है, okay, so if we don't have any more questions, we will be ending। तो उन्होंने फॉर्म भी भेज दिया है। आई एम नॉट श्योर इफ वी कैन एक्सटेंड इट, बिकॉज this is from Rawalpindi University and not us, right? So if you would like to do this, then apply today। So you should contact someone from Premed, and they will guide you about what to do, right? And they'll probably extend if they can।